बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्यारा मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स। पेंस प्रोफेशनल विंग की जानिब से एक और काविश हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेके हैं जो कि वेरी हॉट इन डिमांड है आजकल। प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम ये आज का जो हमारा 1 घंटे का सेशन है वो करेंगे। उसमें हमारे साथ पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम उमर ख़याम है। मैं प्रोफेशनल विंग को लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं रियल एस्टेट लाइसेंस सेल्स पर्सन भी हूँ और मैं प्रॉपर्टी एडवाइस और वो भी मतलब वो करता हूँ। तो हम प्रोग्राम को फॉर्मली शुरू करने से पहले मैं आपको अपने आज जो गेस्ट हैं हमारे साथ अली सैयद भाई हैं उनके साथ उनका थोड़ा तारुफ करवा दूं। अली भाई जो है वो लोन हाउस के बिजनेस ऑनर हैं और ये मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हैं। तो हम प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं और अली भाई की तरफ जाते हैं। अली भाई कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुंबई आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अली भाई आज के प्रोग्राम में हम लोगों का एक्चुअली मेन जो था कि बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोगों के लोन्स हैं बहुत सारों के अप्रूव हुए हुए जो हैं जिनकी एक्सपायरी हो गई है वो दोबारा जब अप्लाई करने जाते हैं तो बैंक के क्राइटेरियाज डे बाय डे चेंजेस उसमें आ रही हैं। तो हमारा आज का मकसद ये है कि हम जो है इस जो सेशन में हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, उनको हम ये अवेयरनेस दें कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है और आगे इसकी फोरकास्ट क्या है ताकि लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वो करें। तो काइंडली थोड़ा आप जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें लोगों से कि आप क्या करते हैं, आपकी क्या क्या मतलब जो खिदमात हैं जो आप वो देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। जी, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। इस इंडस्ट्री में पास्ट 17 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो मॉर्गेज एडवाइज़र एज वेल एज रिस्क एडवाइज़र। रिस्क में सभी तरह की रिस्क इंश्योरेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन आजकल लास्ट कह लें कि 5-6 सालों से मॉर्गेजेस जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में है। सही। चलें अली भाई हम जरा अब काइंडली आप ये बताइए कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट, हम डेली एक वो फियर सुनते हैं, बहुत सारी न्यूज में आती है कि जी इस बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इतना हाइक कर दिया, इस बैंक ने ये कर दिया। क्या चल रहा है मार्केट में, क्यों हो रहा है ये इंटरेस्ट रेट? कभी इतने ज्यादा नहीं गए लास्ट 4 3 4 इयर्स में। अब एकदम जो है वो सारे के सारे ऊपर चले गए हैं। उसमें जो फर्स्ट होम बायर्स हैं उनको बहुत ज्यादा फियर है। आप थोड़ा ये बताएं कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों ये सारे के सारे जो है वो क्या गवर्नमेंट का प्रेशर है, क्या क्यों ये मतलब सारे के सारा ये एक्शंस हो रहे हैं? आई डोंट थिंक जो फर्स्ट होम बायर्स हैं उन्हें पैनिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट रेट की हिस्ट्री देखें तो ये 9-10 बल्कि 12%, एक दौर में बल्कि 24% भी थे। लेकिन तब प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत कम थी। और ये कहाँ से 12 से आप देखें कितने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसे हुआ है, न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में, कि इतने लोग गए हैं। इंटरेस्ट रेट जो हैं वो वेरी करेंगे। ये बेसिकली इन्हें इंस्ट्रक्शंस होती हैं आरबीएनजेड की तरफ से। रिजर्व बैंक जो भी इन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है तो सारे बैंक्स जो हैं, स्पेशली जो कह लें कि फर्स्ट ईयर लेंडर्स जो कि आपके मेजर 4 बैंक्स हैं, इन इन मेजर 4 बैंक्स के अलावा दूसरे बैंक्स भी हैं। तो रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इन्हें उसको फॉलो करना पड़ता है। एक बैंक शुरू करता है और उसके पीछे पीछे सब बैंक करते हैं। तो सही। ये बढ़ेंगे थोड़े और, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से आप अपना जो फर्स्ट टाइम बाइंग का जो ड्रीम है उससे आप अबैंडन ना करें, क्योंकि अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो इंटरेस्ट लोन बहुत ऊपर थे पहले। ये तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में नीचे हुए हैं इतने। सही। तो अली भाई ये तो, आपने ये कहा कि ये इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बड़ी अच्छी एडवाइस है।
बट लाइक जिन लोगों ने अभी रिसेंटली घर लिया है, जिन्होंने 2.19% पे या 2.50% पे घर लिया है, अब वो जब ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कल को 4% या उससे ऊपर जाते हैं, तो उनकी जो रीपेइंग पावर है वो कम हो जाती है इसकी वजह से। आप जी, उसके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, और ये एक्चुअली कोई हद है, कहाँ तक जाना है, इन्होंने क्या फोरकास्ट है इसकी? इसमें भी मैं यही कहूंगा कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बैंक इनिशियली इन्हें लोन देता है तो बैंक का एक अपना टेस्टिंग रेट होता है। अभी जैसे 2.19 से इस वक्त 3.65 स्पेशल चल रहे हैं। तो लेकिन जो कस्टमर्स हैं उन्हें अंदाजा नहीं होता कि बैंक जब लोन देता है उनकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक एक अपना वो टेस्टिंग रेट यूज करता है। जैसे कि मैं एक बैंक का जिक्र करता हूँ या दो बैंकों का जिक्र करता हूँ। एएनजेड का टेस्टिंग रेट है 6.3, एएसबी का टेस्टिंग रेट है 6.5। किसी को नहीं पता कि आपके मॉर्गेज कैलकुलेटर में जब हम अफोर्डेबिलिटी यूएमआई कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यूएमआई का मतलब यह है कि अनकमिटेड मंथली इनकम सरप्लस। तो वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हम 6.45 या 6.3 को ध्यान पे रखते हुए करते हैं हर कस्टमर के ठीक। लिए। और फिर आपको अप्रूवल अकॉर्डिंगली मिलता है। तो अगर तो ठीक। इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर जाते भी हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि आपका इतना सरप्लस बन रहा है, तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अली भाई, अब करंट सिचुएशन में फर्स्ट होम बायर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं? जो एक तो गवर्नमेंट ने जो 5% जो लोन वो गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें कायंगा हो रहा है कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट है जिसमें डिफरेंट बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें जी, आके तो लोगों की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। मतलब आप जी, उसमें 700,000 से, जो अगर आप ऑकलैंड में हैं तो यू कैन नॉट बाय हाउस लाइक मोर देन जी। 700,000 ब्रांड न्यू, अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें। उधर से अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट की सिचुएशन देखें तो आप देखेंगे कि 700,000 में ऑकलैंड में तो कुछ अवेलेबल नहीं, मतलब बहुत लिमिटेड आपकी जो चॉइस हो जाती है उसमें। और जो गवर्नमेंट ने एक वो जो न्यू ऑनरशिप स्कीम की शुरू की है की प्रोडक्ट है, उसकी वजह से शायद कुछ हो, बट लेकिन अभी तक कुछ वो समझ नहीं आ रहा लोगों को। आप बताएं कि फर्स्ट होम बायर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो कर सकते हैं, और आप जो आप क्या एडवाइस करते हैं उनको कि वो क्या करना चाहिए जिनके बेसिकली पास फर्स्ट टाइम बायर्स, सॉरी, बेसिकली फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं उनके पास फिलहाल अभी लास्ट वीक जो है आरबीएनजेड की तरफ से न्यू इंस्ट्रक्शंस आई थी, जो कि बैंक्स ने सबसे पहले बीएनजेड ने उसे फॉलो किया, और फिर मंडे को एनजेड और दूसरे बैंक्स भी जो हैं वो इसे फॉलो कर रहे हैं। इवेंचुअली दे ऑल विल फॉलो। उसके मुताबिक जो है आपको यू मस्ट हैव टू हैव 20% डिपॉजिट। तो अगर तो किसी के पास 20% डिपॉजिट नहीं है और वो फर्स्ट टाइम बायर है तो उसको ऑब्वियसली इंतजार ही करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास है 20% तो ही शुडंट वेट। ओके। अब आप देखें, अब आज से मतलब 2 वीक पहले तक 10% वाले भी अप्लाई कर सकते थे, जी, और उनको भी लोन जो था वो अवेलेबल हो जाता था। अब ये 20% की जो गवर्नमेंट ने इन्होंने जो आपकी रिजर्व बैंक ने एक कंडीशन रख दी है और सारे बैंक उसको फॉलो कर रहे हैं, ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक ये रहेगा, मतलब ये सिचुएशन जो है? लास्ट टाइम ये 2016 में इन्होंने किया था और नंबर ऑफ मंथ्स तक ये रहा था। मे बी अर्ली नेक्स्ट ईयर, मे बी मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये हटा दें वापस। फिलहाल इन्होंने प्राइसेस को जो है वो स्टेबल करना है, क्योंकि प्राइसेस इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीज़ें की हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन फर्स्ट होम बायर का क्यू जो है वो फिर भी बढ़ता जा रहा है। तो उसको प्राइस जो हाउस प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। बट दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, इवेंचुअली इन्हें ये ख़त्म करना पड़ेगा फ्यू मंथ्स लेटर। ये नहीं पता 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, इवेंचुअली ये ख़त्म कर देंगे। और फिर 10% वाले जो हैं दे कैन बाय अगेन टुगेदर। मेरी एडवाइस, जिनके पास ऑलरेडी अप्रूवल है 10% वाले, बैंक्स जो हैं उसको ऑनर कर रहे हैं। तो अगर उनके पास चांस है
कि जैसे कि उनका एक्सपायर हो रहा है मंथ या 2 महीने के बाद या फ्यू वीक्स लेटर, उन्हें होल्ड नहीं करना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द कुछ बाय कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो भी इसी 20% वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। सही 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 सही, थैंक्स फॉर द एडवाइस। तो व्यूअर्स, अली भाई ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। अगर आपके पास ऑलरेडी अप्रूवल है तो प्लीज उसके ऊपर आप एज क्विकली एज पॉसिबल आप उसके ऊपर एक्ट करें, और कुछ ना कुछ आप जो आपकी रेंज में आता है आप उसको बाय करें, ताकि आप जो है वो इस हैसल से बच जाएं। अदरवाइज 20% जो है वो, अगर आपकी वो अप्रूवल जो है वो एक्सपायर हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको बैंक जो है वो ट्रीट करेगा 20% के ऊपर। अच्छा अली भाई, अब जो लोग जिन्होंने फर्स्ट होम अप्रूवल्स ली हुई हैं और वो उन्होंने न्यू बिल्ड में कुछ उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर किया हुआ है, लाइक उन्होंने डाउन पेमेंट कर दी है, और वो जो उनको प्रॉपर्टी है वो बिल्डर जो डेवलप करके नेक्स्ट ईयर में देगा, तो अगर गवर्नमेंट उस वक्त तक वो ये अपना रूल चेंज नहीं करती तो, और उनकी जो अप्रूवल्स हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, तो देन बैंक उनको कैसे देखेगा? क्योंकि उनकी अभी 10% वाली अप्रूवल जो है वो तो एक्सपायर हो जाएगी उस टाइम, अगर वो साल के बाद, और जी उसके बाद अगर अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप नहीं होती, मैं ट्रंकी की बात कर रहा हूँ, तो वो ट्रंकी में वो फिर क्या ऑप्शन क्या होगी? क्या उनको लाजमी 20% देना पड़ेगा, या उसको बैंक जो है वो स्पेशल कंसिडर कर सकता है? देखें, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये 20% वाला जो रूल है ये सदा नहीं रहेगा, इवेंचुअली इन्हें ये चेंज करना ही पड़ेगा। जहाँ तक टर्नकी का सवाल है, लोगों ने साइन किया हुआ है और वो जैसे 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, और ज़्यादातर वो 12 मंथ से भी ज़्यादा हो रहे हैं, 15 मंथ्स 18 मंथ्स, तो बैंक 12 मंथ्स के लिए तो दे रहा है। या और हैंस की अगर ये चेंज करते हैं रूल, तो उस वक्त क्या रूल होगा 12 मंथ्स लेटर, वो उस वक्त पता लगेगा। फिलहाल इनका ये है कि उन्हें, बैंक को तो ये ऑलरेडी पता है कि यू आर टाइड अप विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक आपके लिए वो नरमी बरतेगा आपको, यानी कि अप्रूवल देने में। मे बी यू हैव टू रीअप्लाई, मे बी दे विल रिन्यू इट। लेकिन बैंक जो ने ऑलरेडी दिया हुआ है उनके लिए तो नरमी बरतेगा, लेकिन जो नए आने वाले होंगे उन्हें फिर नए रूल्स के मुताबिक वो केटर करेगा। सो इट मीन्स अगर वर्स्ट केस में अगर वो जो प्री अप्रूवल्स हैं, जो कंडीशनल अप्रूवल्स हैं, अगर वो एक्सपायर होती हैं, तो बैंक कैन रिकंसिडर दैट इवन ऑन 10%, जबकि उस टाइम जो न्यू क्लाइंट्स के लिए वो 20% ही रूल होगा। जी थैंक यू। अच्छा, अब अली भाई, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? मतलब जब से गवर्नमेंट ने 40% डिपॉजिट कर दिया ओल्ड हाउसेस के लिए, न्यू हाउसेस में 20% की है ऑप्शंस, तो उस उनके लिए अभी क्या ऑप्शन क्या है? मतलब क्या वो 40% जो है इसको गवर्नमेंट सून चेंज करेगी, या स्टिल मार्केट को स्टेबल करने के लिए इट्स अ न्यू नॉर्म नाउ? ये कंटिन्यू रहेगा लंबे अरसे तक। इसको फौरन नहीं चेंज करेंगे। इन्होंने ओवरसीज इन्वेस्टर्स का किया था, इन्वेस्टर्स के लिए किया है, सीजीटी इंट्रोड्यूस करवाया है, ब्रॉडलैंड को 5 से 10 साल किया है, और फिर इन्होंने टेनेंसी के लॉज को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, और वेंडर्स को, जैसे कि कैलकुलेटर में वेंडर्स के एक्सपेंसेस जो थे वो नहीं वो ऐड करते थे, अब वेंडर्स के काफ़ी एक्सपेंसेस जैसे नॉन ऑक्यूपेंसी और टैक्सेस और जो रेट्स और इंश्योरेंसेस भी नहीं ऐड होते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड होना शुरू हो गई हैं। नया क्रेडिट कंज्यूमर का जो CCCFA हम उसे कहते हैं, जो फाइनेंशियल एक्ट है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो हैं अब उसी में फॉल कर रही हैं। ओके, थैंक यू अली भाई। सो इट मीन्स के जो है वो अभी ये एक न्यू नॉर्म है, हम लोग अब जो है वो कभी दोबारा ये शायद जल्दी ना देखें कि जो ओल्ड प्रॉपर्टीज है उनके लिए भी 20% गवर्नमेंट अलाउ Yeah. करे, रिजर्व बैंक अलाउ करे। और जी, थैंक लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो कि इक्विटीज लेके बैठे हुए हैं, 40+% की इक्विटी हैं, तो दे स्टिल हैव द चॉइस कि वो फिर भी क्योंकि जिस तरह किसी ने प्रॉपर्टी बाय की 1-2 साल पहले, और उसकी अब प्राइस जो है वो इक्विटी इतनी हो गई है कि 40% प्लस की हो गई है, तो वो इन्वेस्टर कैटेगरी में
आ गया है और वो क्वालिफाई करता है क्योंकि उसके पास 40% मिनिमम 40% इक्विटी है। ओके, और अली भाई, जब बैंक फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 40% इक्विटी है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का घर अभी उसकी इक्विटी 1.4 मिलियन है और उसका 600,000 का लोन है, और बाकी जो वो उससे अगर कोई घर परचेज कर लेता है फॉर एग्जांपल 800,000 का, तो बैंक जो है वो पूरी अमाउंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो बैंक उसकी डिपॉजिट भी दे रहा है और वो भी दे रहा है। मार्केट में जो इस टाइम सिचुएशन ये है कि आप ये देखें कि जो रेंटल रिटर्न्स हैं वो उस प्रॉपर्टी की प्राइस के साथ इस टाइम मैच नहीं कर रहे। उसके जी। बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये क्या मतलब, अब फिर इन्वेस्टर्स जो अगर फॉर एग्जांपल वो 40% ले लेता है उस पे अपने डिपॉजिट पे प्रॉपर्टी उठा लेता है, बट लेकिन रेंटल रिटर्न ही इतना नहीं है, यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट अ लॉट ऑफ मनी एवरी वीक, तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इन्वेस्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं और उन दो तरह की उनकी भी आगे कैटेगरीज हैं। एक है ट्रेडिशनल इन्वेस्टर और एक है सीजनल इन्वेस्टर। अच्छा, ये पैनिक जो है सीजनल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा होता है कि दे कैन नॉट, लेकिन ट्रेडिशनल इन्वेस्टर जो है वो इसकी वरी नहीं करता। मेरे पास ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज बाय कर ली हैं लेकिन उन्होंने आज तक रेंट आउट नहीं की, खाली पड़ी सही हुई हैं वो प्रॉपर्टीज, क्योंकि दे सही। नॉट वरी अबाउट दैट। वो अपना जो है मॉर्गेज पे कर रहे हैं। कुछ ऐसे सही। सीजनल इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि उनका ये कंसर्न होता है। मेरी सीजनल इन्वेस्टर्स के लिए यही जो है एडवाइस है कि अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे 40% उनके पास इक्विटी है, और अगर उन्होंने वीकली 100 200 300 अगर वो एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं अपनी जेब से, तो फिर ये उनका कंसर्न नहीं होना चाहिए। ओके, मीन 200-300 अगर वो वीकली अपनी उससे पे इवन करेंगे तो। 500 अगर अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, ओके। ओके। हाँ, तो डजंट रियली मैटर कि क्यों, डिपेंड करता है उनकी इनकम पे, उनकी अफोर्डेबिलिटी पे। अगर उनकी इनकम हाई, अगर वो हाई अर्नर्स हैं तो वो $1000 वीक भी उन्हें उनके लिए परवाह नहीं है। ठीक हो गया। तो अली भाई, आप अब मैं एक बेसिक क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसको कैसे डील करते हैं? आपके पास क्या ऑप्शंस होती हैं? कौन कौन से बैंक्स हैं जो आपके पैनल के ऊपर हैं? और क्या आप मल्टी मतलब बैंक्स में उसकी एप्लीकेशन डालते हैं, या आप जो है वो एक बैंक में डालते हैं? इसके बारे में काइंडली थोड़ा बताइएगा। देखें, जब से ये 10 और 20% वाले रूल्स आए हैं, इसने तो काफ़ी लिमिटेड कर दिया है। वैसे मेरे पास 39 बैंक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। इसमें फर्स्ट ईयर लेंडर्स हैं एंड सेकंड ईयर लेंडर्स हैं। फर्स्ट ईयर लेंडर्स के इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो जैसे मेजर 4 बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वैसे ही होते हैं, और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं बहुत। तो लोगों के पास चॉइस तो है कि वो सेकंड ईयर लेंडर के पास जाएं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे, तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि वो उस तरफ जाएं। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि आप, सॉरी, आप जरा रिपीट कीजिएगा अपना बेसिक क्वेश्चन कि क्या था। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास मतलब जब एक क्लाइंट आता है तो आप जी जब उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट उसमें डालते हैं जी। बैंक्स में, तो आप जो है वो क्या उसको प्रेफरेंस आप कैसे देते हैं? और सेकेंडली, क्या आप मल्टी एप्लीकेशन डालते हैं, जस्ट आप या वन बाय वन डाल रहे जब डिपेंड करता है बैंक्स की लैंडर्स की पॉलिसीज क्या हैं। हैं? ओके। अक्सर जो है जिनके पास हैंडसम डिपॉजिट है वो उनके पास तो चॉइस होती है कि हम उन्हें मल्टी बैंक्स के पास ले जाएं, लेकिन एक बंदे के पास चॉइसेस कम है, उसका डिपॉजिट कम है, तो फिर हम दो बैंक्स मैक्सिमम उनको लेके जाते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि उनकी जो है क्रेडिट इंक्वायरी बहुत ज़्यादा हो, कि हर बैंक के पास लेके जाएं फिर क्रेडिट इंक्वायरी होगी। तो हम्म। कोशिश हमारी ये होती है कि जिससे वो बैंकिंग कर रहे हैं उसके पास लेके जाएं या एक और दूसरे बैंक के साथ। तो अगर अगर वो जो क्रेडिट इंक्वायरी ज्यादा हो तो उससे उसकी हिस्ट्री पे क्या इफेक्ट होता है? उससे ये होता है कि जो लेंडर होता है वो, उसके लिए एक अलार्म रेज हो जाता है कि ये बंदा जो है शॉप अराउंड कर रहा है। तो कई जो असेसर होते हैं वो इसको वो देखते हैं ऐसे कि दिस इज ही शॉपिंग अराउंड, तो इसको वो कई असेसर इसको अच्छा नहीं समझते। ओके। ओके।
ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, नेक्स्ट ये है कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं, आप इंश्योरेंस के बारे में भी वो एडवाइस करते हैं। इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और कैसे आप उसको प्रोडक्ट को ट्रिम करते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, वो डिपेंड करता है कि वैसे तो मैं रिस्क इंश्योरेंस में डील करता हूँ। रिस्क इंश्योरेंस ये मॉर्गेज, लाइफ, इनकम प्रोटेक्शन, ट्रॉमा, रिडेंडेंसी, हेल्थ, ये सारी रिस्क इंश्योरेंसेज हैं। इसके अलावा फायर इन जनरल जो होती है, हाउस कंटेंट्स कार, इसमें नहीं मैं डील करता, मैरीन में नहीं डील करता, बिल्डिंग इंश्योरेंस वगैरह में नहीं डील करता। तो रिस्क इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट्स मैंने शुरू में आपको बताई हैं, मॉर्गेज, लाइफ, इनकम प्रोटेक्शन, रिडेंडेंसी, ट्रॉमा एंड हेल्थ, ये प्रोडक्ट्स जो हैं डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं, जैसे कि उनका मॉर्गेज की एक उन्होंने लिया हुआ है कि मिलियन का मॉर्गेज है, तो उनकी बैंक की एक रिक्वायरमेंट होती है, रिकमेंडेशन होती है कि जी आप यू मस्ट हैव मिनिमम जितना आपका मॉर्गेज है। तो अगर आपका मिलियन है तो मिलियन की यू कैन हैव इट, और नहीं तो आप ये नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यू मस्ट हैव मिलियन, आप 500,000 की भी ले सकते हैं। इसके साथ आप ट्रॉमा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने इनकम प्रोटेक्शन लेनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स जो ऐड की जा सकती हैं। थैंक यू। अली भाई, कैसे डिफरेंस क्या है, मतलब जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले तो आप ये बताइए न्यूजीलैंड में कितनी कंपनीज काम कर रही हैं और कौन सी जो है वो दूसरे से कैसे वेरी करती है, और ये काइंडली आप बताइएगा मैं। देखें, कंपनी को एनालाइज करने के लिए बेहतर यह है कि आप उसकी क्लेम रेटिंग को स्टडी कर लें। न्यूजीलैंड में जो 5-6 कंपनीज हैं मेजरली, और भी हैं दूसरी, लेकिन इनमें टॉप की जो है AIA है, जिनके पास 40-45% मार्केट शेयर है। बाकी फिर सिग्ना सिग्ना है, पार्टनर्स लाइफ है, एस्ट्रॉन है, फाइडेलिटी है, और भी कंपनीज हैं। और AMP वगैरह जो हैं, इनके फिर मार्केट शेयर 8-8, 10-10, 12-12% हैं टोटल। तो अगर तो आपने देखना है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के पास आपको जाना चाहिए, तो आप देखें कि क्लेम रेटिंग क्या है। अगर क्लेम रेटिंग AA है तो डेफिनेटली आप इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि आपने एक पीस ऑफ माइंड के लिए लेते हैं कि आपने वैसे तो आपने क्यों लेनी है इंश्योरेंस, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो एक पीस ऑफ माइंड है कि जी इफ अगर कुछ हो जाता है ऐसा, तो व्हाट आर माय ऑप्शंस। तो अच्छा। उस सिनेरियो में आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाती है। अ, इसी वजह से इसी असना में आप फिर क्लेम रेटिंग को देखते हैं कि यार आया कि जिस इंश्योरेंस कंपनी के पास मैं जा रहा हूँ, इफ आई नीड ए क्लेम, अगर मैं कोई क्लेम डालता हूँ तो मुझे ये देंगे। तो इसलिए जब आप क्लेम रेटिंग देखते हैं, जैसे कि मैंने AI का सबसे पहले जिक्र किया, जी। इनकी क्लेम रेटिंग जो है वो AA है। इनका रेवेन्यू जो है $1,500 पर एनम है। वाह। इनका क्लेम्स जो ये पे करते हैं $650 million के हर साल क्लेम पे कर देते हैं। पर्सनली मेरे किसी भी क्लाइंट का कभी क्लेम नहीं डिक्लाइन हुआ। अगर मैं कहूँ कि मेरे 100% जो है मेरे क्लाइंट्स के क्लेम एक्सेप्ट हुए हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नाइस नाइस। बड़ी अच्छी बात है, अगर मतलब सारे क्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स के जो आपका जो काम है वो भी एक बोलता है कि मतलब आपने उसके ऊपर बड़ा अच्छा वर्क किया हुआ है। और व्यूअर्स, मैं पर्सनली बता दूं कि मैं अली भाई का क्लाइंट भी हूं, मैं रिसेंटली इनसे मैं इंश्योरेंस भी लिए। तो अगर आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस या आपको मॉर्टगेज इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो प्लीज़ आप अली भाई से कांटेक्ट करें। मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली इन आवर कम्युनिटी, जो जो ये सारा कर रहे हैं। बल्कि इवन मैंने बहुत सारों को और भी कंपेयर किया तो अली भाई से मैं मुझे नहीं लगा कि किसी के पास ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हैं। तो अली भाई, आप थोड़ा ज़रा ट्रॉमा इंश्योरेंस पे थोड़ा बता दीजिएगा कि वो क्या है और जो उसकी क्या मतलब अहमियत है उसको ऐड करने की। जी, ट्रॉमा का मैं एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ।
ट्रॉमा जो है वो लाइफ के ऑपोजिट है। लाइफ इज समथिंग के जब आप पिक्चर में नहीं है तो आपकी फैमिली को बेनिफिट हो रहा है उसका, लेकिन ट्रॉमा में आप स्टिल पिक्चर में हैं। ट्रॉमा ये 70 टाइप्स के ट्रॉमा है। बिफोर द एज ऑफ 65 मेल पॉपुलेशन जो है 50% ऑफ द मेल पॉपुलेशन को ही ट्रॉमा होता है, और फीमेल पॉपुलेशन जो 1/3 फीमेल्स होती हैं उन्हें होता है बिफोर द एज ऑफ 65। 70 कंडीशन जो हैं 70 कंडीशन इसमें हार्ट कैंसर, स्ट्रोक्स, एक्सीडेंट्स, हेड इंजरीज, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, पैराप्लेजिया, डिप्लीजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, लॉस ऑफ लिम्स, लॉस ऑफ साइट। तो काफ़ी मेजर किस्म के ट्रॉमा जो कि इसमें कवर हो सकते हैं। तो ट्रॉमा बेसिकली ऐसे है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हो गया है और आप इफ़ यू अनएबल टू मेक ए लिविंग, और आपको एक जैसे 100,000 का आपने कवर लिया हुआ है, और अगर इस तरह का कुछ होता है तो आपको एकदम 100,000 का एक किकबैक मिल जाता है, जो कि बंदे की ज़िंदगी में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। गुड 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 गुड, चलिए जबरदस्त है। अच्छा अली भाई, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी हमें कमेंट्स में भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ये है कि जो जो क्या उसे कहते हैं, इस्लामिक फाइनेंस क्यों नहीं आ रहा, इस्लामिक मॉर्टगेज न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है, जबकि हमारे जो नेबर ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसमें आप थोड़ा उसमें गाइड करें कि एक्चुअली क्या मतलब रीजंस हैं क्यों इस्लामिक फाइनेंसिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और सेकेंडली क्या क्या इसके ऊपर एफर्ट्स हुई हैं या हो सकती हैं। जी, मैं पहली दफ़ा इस्लामिक जो क्योंकि मेरा बड़ा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर काफ़ी जो है स्टडीज़ कर चुका हूँ, और बल्कि काफ़ी डेलीगेशन जो हैं बहरीन से और मलेशिया से 2005 और 2006 में आए हैं न्यूजीलैंड में, और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे सेमिनार्स किए हैं KPMG में, हायत रीजेंसी वगैरह में, और मैंने वो सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। तो वो आए, उन्होंने अपने मार्केट को स्टडी किया। मुझे नहीं लगा कि शायद मार्केट बहुत छोटी है उनके लिए, प्रोमिसेस थे, लेकिन कभी उन्होंने फिर बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करते हैं तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोनों कन्वेंशनल बैंकिंग ही होती है। इस्लामिक बैंकिंग जो है एक कह लें हम नाम यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो ऑस्ट्रेलियन इस्लामिक बैंक्स जो हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उन ऑस्ट्रेलिया की कन्वेंशनल बैंकिंग के हदूद में रह के अपनी इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को रन करना पड़ता है, जो कि कह लें कि नाम है इस्लामिक बैंकिंग का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कन्वेंशनल बैंकिंग ही है। थैंक यू अली भाई। मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम लोग जो है वो इसके ऊपर एफर्ट भी करेंगे पाकिस्तान एसोसिएशन न्यूजीलैंड के प्लेटफॉर्म से। अभी क्विकली हमारे पास 2 मिनट्स हैं, तो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक तो आपका नंबर चाह रहे हैं, मैं समी हसन भाई, सो समी भाई मैं अभी देखिएगा इनका मैं नंबर जो अली भाई का नंबर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यू कैन नोट डाउन दिस ना। तो और अली भाई, सेकंड ये क्वेश्चन आसिम भाई की तरफ से हमें आया है कि जो अभी कायंगा और जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बताइए। तो उसके बारे में आपसे डिस्कशन हो रही थी। तो आसिम भाई, कायंगा और पार्टनरशिप प्रोग्राम एक प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें जो बंदे अपना डिपॉजिट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो गवर्नमेंट जो है जो कायंगा हो रहा है वो उनको सपोर्ट करती है, वो उनके साथ एज अ पार्टनर आ जाती है, वो उनको 200,000 तक जो है वो पैसे वो उनको टॉप अप कर सकते हैं उनके डिपॉजिट में, अगर उनमें एबिलिटी हो कि वो उसको रीपे कर पाए। तो इसकी डिटेल जो है वो कायंगा की वेबसाइट के ऊपर है। तो अभी हमारे साथ जो है वो अली भाई का ये नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। तो ये काइंडली सामी भाई आप काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा, और भी अली भाई से किसी को
कोई हेल्प चाहिए हो, अली भाई इज रियली हेल्पफुल, तो वो आप काइंडली जो है वो इनसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अली भाई बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा एक सेशन रखेंगे। आज सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू था, थोड़ा पता चले कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम जो आपसे एक डिटेल पूरा उसमें सेशन रखेंगे, जिसमें हम सारी चीजें जो है वो डिटेल से जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ ये था कि थोड़ा ओवरव्यू हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, और थोड़ा हमारी कम्युनिटी को पता चले कि हमारे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, और आप हमें स्पेशली कैसे हेल्प कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आप जो है थैंक वो यू। जो आपने टाइम दिया, थैंक यू अली भाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, guys, so we have another um, hot guest with us. So, Sarah, welcome to my show. Thank you. Thanks for joining me. And before we continue, I will just introduce Sarah. So, Sarah is an honor. Sarah is actually a financial advisor. She is a mortgage advisor, and she has a rich experience actually in this field. She is running the umbrella company. She was the first home with the New Zealand TV New Zealand as well, and she is doing a lot in the community. So welcome Sarah to our show, and thanks for joining us. Hi, thank you so much for having me. So, yes, I am a financial advisor. I fall into the home loan market. So I deal predominantly with mortgages. I do a little bit of KiwiSaver, but predominantly mortgages. And at this point in time, it's definitely a different market out there. You've probably seen a lot in the media, talking about interest rates, talking about home loans, first home buyers, deposits, that sort of thing. So even though I'm a financial advisor, I'm really well known as a mortgage broker. So I've been in the business for 10 years. As UMAR said, I have been in the media a lot. I created the TV show Our First Home, which ran for 2 seasons. It was so successful, I even bet the block. So my losing team, the losing team made $275,000 and the winning team made close to $400,000. So yeah, it was a renovation show. I'm also the News Talk ZB property expert and financial expert, as well as 7 Sharp. So I've been doing it for a long time, but the good thing is I'm completely free. I'm an absolutely free service to you, and my job is to facilitate and help you get your first home or get a mortgage, a home loan from the bank. So yeah, that's what I do. Thank you, Sarah. You're wonderful. I know, like you personally, that how you are actually helping the people. And so, Sarah, actually, what's going on in the market now? Like it's daily basis. It's like alarming. Like the interest rates are hiking up. Yeah. Like one bank is doing like on a day, and tomorrow another interest rate. So what's going on? And is there any stop line for this? Like, or it's just going on and on and like people are really I know many of my clients, they are really disturbed actually due to this, because it's just not a good news for them, because some people they want to buy a house. So if you can just explain me how actually it's going on, and is there any stop line for this? Okay. No, there isn't a stop point. And I know that it can seem quite scary with the interest rates. Don't forget that this is the first time we've seen the interest rates rise in 7 years. So we have been conditioned to really low interest rates. That's the norm. We've been conditioned to have interest rates around 2%. We even got as low as 1.99 this time. That was a 1-year rate. Now we're currently sitting at a 2-year rate for 4.2. That's a huge jump. And the fact is, like, I couldn't believe it the other day. I was cooking my children dinner, and the interest rates had gone up the day before. I got a notification
and the interest rates went up again. Within 24 hours, they went up twice. That's unheard of. So we're definitely in a harder market. Do I know when the interest rates are going to stop? No, I don't. The highest I've ever seen them in my 10-year career is at 10.99, and that was in the global financial crisis, 2008, 2009. But where the interest rates, I believe, are going to go a bit higher. So when you apply for a mortgage, the broker will talk to you about what we think your interest rate will be. And we were saying, right, we're going to do your mortgage, you're going to be approved, your interest rate is going to be between 4.2 to 4.5, but that's the interest rate you're going to get. The banks are working out your application and making sure that it's affordable for you using a test rate, and the test rate is 7%. So that's their internal interest rate that they're working out every loan on. So that tells me that the banks are expecting it to keep going up. But don't let that stop you getting a home loan, because the house prices are not going to stop. Okay. And you'll never get approved for something that you can't afford. So there's something called the Responsible Lending Code. And myself, being your mortgage broker, and the bank that I put you to, they have to make sure that they're putting you in the best position possible, and that they're not going to put you in what's called financial harm. So if you get approved for a home loan, it does mean that you can afford it. So please don't be put off. But definitely some things have to change. So things that have to change are eating out. You may only eat out once a month instead of 3 or 4 times a month. You may not have Uber Eats as much as you normally do. You do have to tighten your belt. So yeah, but please do not, I mean, I know the interest rates are going up, but please do not be put off by buying a home. Currently in the home loan market, homes are going up by 22%. So if you think about that, if you're buying a house, and even say, let's say 5%, and you're paying a 5% mortgage, you're still better off, because the houses themselves are going up by 22%. And the home loan market, it's always going to be a little bit volatile, but the housing market is completely stable. There's not enough houses for people to buy. Thank you, Sarah. So, and Sarah, just 2 weeks ago, like, it was a shocking news for the 10% deposit buyers. I can't that hear banks you. are You've not- gone quiet. Can you hear me now? No. Oh, Can you hear me? Hello? no, I've completely lost you. There's no volume there. Can you hear me now? I think I'll leave and then come back in. Okay, let me just do it. Sorry guys, there is some technical issue. Sarah is coming back. Please stay with us. So she will be with us again. Sarah, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Okay, maybe there is some technical issue. Yeah, so Yeah. my question was, it was shocking news, a week ago, that the 10% deposit home buyers are out Yeah. of the scene now, Yeah. So how long this situation is going to Okay. be here in the market? And, it's Yeah. lot of concern for the 10% Yeah. home buyers, mostly the So- first home. The key thing is the 10% are not out of the market. You can still get a home loan at 10%. Mhm. Unfortunately, some reporting from media outlets that said that the 10% was definitely off the table. It's not off the table. They've reduced the amount of lending that they can give to people. So if you imagine that there's 100 of us in a room and 50 of us can get the 10% lending,
They've now changed that, so only 20 of us can get the 10% lending. So they've just reduced it. I personally feel that it's only going to be for a short time. So normally in March, sort of end of financial year, banking policies tend to change. So I feel that it's not going to be for that long. Nice. The key thing is you need to be with a very friendly bank. So when you're buying your first home, you have to go to what's called main bank. So where your salary goes into. So I'm with ASB, my salary goes into ASB. At the moment, without being mean to a bank, the banks that are the friendliest for first home buyers, ANZ and ASB. They're the key banks. ANZ are aggressive. They're lending a lot of money at the moment. So most of the deals I'm doing at the moment are with ANZ. So it means like if someone has like approval for 900,000 before with 10% deposit, with the new changes now maybe he can get like 800,000 or something that, but like he can still go for like old property too, or like is there any limitation that he or she can just only buy the brand new properties? No, you can go for an existing property or a brand new property, being a first home buyer. Yes, you are correct when saying that if you got approved 6 months ago and you got approved for 900,000, the likelihood is your approval limit would have dropped. So it's just because of the interest rates and what the banks are terming affordability for you. So yeah, definitely. If you've had a pre-approval in the past that is not current, then you'll probably get a slightly less approval. Sure. Thank you, Sarah. So we have a question from Dell. If you can answer. So it's like what happened when the international swap rates go up and the banks start worrying? So yeah, the swap rates. When the swap rates do go up, the banks tend to pull back on their lending a little bit. I do feel that this environment in New Zealand with the tight regulations, there's two main factors. So the factors are the new sort of credit reporting act that's coming in on the 1st of December, which makes it a lot stricter for banks to lend. Now that's a government policy that's coming in. And then I also feel that we're affected by COVID. So don't forget Auckland, 102 days, well done. Everybody else around the country that can go to hairdressers and eat out, lucky you. I can't wait to get to a restaurant. But we're in a bit of a weird environment with COVID. And also due to COVID, some people have had to take things like mortgage holidays or go interest only. Like there has been a repercussion in the field. So yeah, definitely. I think COVID has played a lot to do with it. Sure, no worries, thank you. Also, inflation is going up. That's the other thing. So inflation is the cost of everyday goods. So you would have noticed petrol's gone up. The other key thing to watch is fruit and vegetables. As soon as they start going up, I mean, I've noticed it with vegetables. I'm starting to spend probably an extra $20 a week when I do my grocery shopping. So yeah, when things like that start to go up, you know the interest rates are going to go up too. No, thank you. And one more thing, like, now the interest rates are going up. So what do you expect? Like, what is, like, you can say forecast for next 6 months, like where the interest rate will go as per your experience, I wish I had a crystal ball, but I do feel that they will go up past 5. Yes. Plus 5. Okay. Yeah, past 5%. So if you already own a home and your interest rate is coming off, you can actually break your interest rate and then refix. If you're looking at buying and you can afford to buy now, don't wait 3 months because you'll end up paying extra in your interest rate. So yeah, if you've got any questions, Umar's been great and he's put my phone number there. So feel free to call me and we can have a chat and I can talk to you and find out what your situation is and where you're sitting in the journey of becoming a homeowner. Nice. Yeah. So Sarah, so what is your advice for the people who are actually
interest rates are going to be reviewed now. So what do you advise Yeah. them? They should go for a longer term, like 5 years, 6 years, or like is this just a panic situation for just like Yeah. maybe month or Yeah. 2 months, or maybe like next year again when the economy is stable, like inflation Yeah. rate is like at some stage, then at that stage maybe the interest rate going to lower down again. Well, I can tell you what I did personally. Our mortgage came up for renewal on the 1st of October, and I fixed us for 2 years. I didn't want to fix for 3 years because 3 years is a long time. It's Okay. very easy when you're sitting there and you think, oh, 2 or 3 years' time. But realistically, COVID's only really been in our life for 2 years. So time does sort of slow down. I wouldn't go for the 1 year rate at the moment, just because if you go for the 1 year rate, and it is cheaper, so you're looking at a 1 year rate for about 3.9% or 3.7. But after that 1 year, you could roll off and we could be at 6%. So yeah, right now I'm recommending to my clients 2 or 3 years. Yeah. Thank you. And what do you foresee, like maybe after 2 or 3 years, like will the situation will be the like same, like Are we can we there? see, Hello. can hello, can you hear me? Sorry, what was that? Can you hear me now? Yeah, no, I can hear you. Okay, Sorry, yeah, I've so got my people question, texting me. no, no, That's what's interfering. I've got okay, agents out there selling houses and they're texting me saying, ring my client. okay, okay, no worries. So yeah, so Sarah, like, I mean, at some point, do you think like in future, like in 2 to 3 years, like can we see like the same interest rate, like under 3%, or like it's a nightmare now? Um, Look, those rates were very low and we hadn't seen them before. So if you take the interest rate that was before we got into the 2%ers, the standard interest rate was 5%. So it really is hard to say where we're going to be. We could get there, definitely, but I would just suggest if you're going to buy a house, do not wait. Yeah, Buying a house is yeah, true. something that you obviously you gear up to do. You've got your savings, you've got your plan, but in an aggressive rate market where interest rates are going up, I would be telling people to be cautious and not to wait for 3 or 6 months because your interest rate will be higher. And the difference, so on your standard mortgage in New Zealand, say Auckland, because that's where we live, by it going up by 1%, that can cost you an extra $100 to $120 a week. And that's Yeah, a lot of money per week. lot, yeah. So, yeah. So thanks for your advice. And so what is your advice for actually our investors? Because it's a lot of Oh, investors. yeah, because Yes. the thing is the property prices and the rental returns are totally, it's previously there was not much difference, but now, if you just if someone wants to buy an investment property, the rental yield it's really hard to get like 6.5%, 6% Yeah. even in this market. So what do you suggest for the investors? Because we like I have a lot of customers actually who want to buy the property, but they are thinking like what will be the ideal time to buy the property, and when this actually difference can be Yeah. reduced. So I'm a property investor myself. I've owned many, many rentals over the years. I mean, I think I'm not going to give away my age, but I bought my first property 24 years Yeah, ago. So yeah. that kind of lets you know how old I am. Yeah, no, I saw that. Sorry to interrupt you. I saw on your bio that you bought first property when you was like 22 years old. Like it was Yeah, like I was like 22. surprised. And And you bought your and first my first investment rental at property when 25. you were 25. It's really nice. Yeah. So with investors, the time of really working with yields is gone. So you're never going to get a property. Well, it's going to be very hard to get a property that's going to cover itself. You're always going to have to top up it a little bit. Or if you don't want to top it up, you can go on interest only.
When you buy an investment property, the key thing is you are buying it to hold. What you are wanting to do with that investment property is hold it for capital gains. That is where you make your money. You don't make your money through the rent. You're never going to become rich through rental properties if you're relying on the rent to make you money. You become wealthy or build your wealth with investment properties by holding them, and you need to hold them long term. So we talk about a property cycle in New Zealand, and the property cycle, they say, is every 7 years. So properties double in price, purchase price, every 7 years. So what I recommend to my clients is you're going to buy a property, you're going to hold it, you're going to hold it for as long as you can, so 10, 15, 20 years. And then when you want to retire, or when you need the funds, if you're helping children to buy houses, and when you're helping your kids to buy their first house, or if you're paying for children to go through university, or if a family member gets sick and you need cash, that's when you sell your property. And if you've been holding it for 7 years or more, so let's just say an example, you buy a house for $600,000. After 7 years, that house will be worth $1.2 million. So you have made $600,000. That's where you build your wealth. Nice. So the capital gain is the main, the attraction for Yes. investors. So they cannot calculate with the rental yield, because especially in the current scenario when the prices are, very high. So Yeah. as compared to the rent, so the rental yield cannot be working in the And formal way. it just doesn't work with the interest rates as well. So you've just got to be prepared that there is a likelihood that you will have to top your rental up, or you'll have to go interest only. And interest only is fine. Banks don't mind you going interest only. So when I say you're going interest only, you're not paying down the amount of the money that you've borrowed, which is called principal. You're just paying the interest of the money that you've borrowed. So let's say on $1 million loan, it would normally be sort of, $800 to $900 a week. If you go interest only, you're probably only paying $700 a week or $600 a week. So it does make a huge difference. But again, I do specialize. So I specialize in first home buyers, and I specialize in building rental portfolios. So, if anybody wants to have a chat to me about building a rental portfolio, then you can do it. But with rentals at the moment, I'm recommending my clients buy brand new. So never been lived in. You're the first owner, because the banks are only requiring you to have 10% deposit, which if you're buying an existing property, so something that somebody else has already lived in, you're required to have 40% deposit. So it's quite a big difference. So Sarah, am I heard correctly? If you are an investor for a brand new property, you need 10% or 20%? 10%. 10%. Oh, that's really amazing. That's Yeah. really amazing. Yeah, nice. So, viewers, we have Sarah's contact number on our screen, and if you need any help, Sarah is always helping. She answers call and she advises, very fairly. And I heard like many my clients who are really, give very very good feedback for Sarah. Please contact Sarah on this number. So Sarah, just the last part of our today's event. So. If you can just give a little bit overview for the Kiwi Saver and where to invest, how to invest, Yeah. and for the first home buyers, what the value of Kiwi Saver for them, and so what are the options for the Kiwi Savers for our viewers? Yeah, I think KiwiSaver is amazing. 99% of people that come to me for first home buying, they're using their KiwiSaver. Now, if KiwiSaver wasn't in place, we'd have a lot less people, because it's hard to save. If you've got $30,000 sitting in your bank account, you will go and spend that. If you've got $30,000 sitting in KiwiSaver, it's hard to access. You can't access it unless you're going through a hardship or buying your first home. So I'm a big fan of KiwiSaver. I recommend Generate as a KiwiSaver provider. They're the number one in New Zealand. If you are younger and if you are looking to use KiwiSaver for your first home,
You need to be in an aggressive fund. You don't want to be in a conservative fund. So when we all got KiwiSaver, we all filled out a form. Nobody knew what they were doing, and we all ticked the boxes because we thought we were doing the right thing. If you are currently using KiwiSaver and you're going to be using KiwiSaver for the next 3 to 5 years to purchase your first home, I would. Sarah, your voice gone now. I cannot hear you. I cannot hear you. Sarah, there is some issue. I think we cannot hear you. I cannot hear you. Guys, sorry for the interruption. Sarah will be back for just last few minutes. There we go. Can you hear me? Yeah. Sorry, I've had about 10 phone calls come through. Obviously, Wow. the real estate agents are really Yeah. busy tonight. Yeah. They're out showing Yeah, I houses. know. Yeah, I so know, what I I'm know. saying is KiwiSaver is amazing. Yeah. Use Generate. Generate are a great company. And also look at the fund that you're in. You don't want to be in a conservative fund. You don't really even want to be in a balanced fund. You want to be in the growth fund. Yes. Okay. Yeah, because that's where you're going to get the most sort of bang for your buck. But yeah, KiwiSaver is amazing. It was probably the best thing that the government's ever introduced, and most of the people that I see buying their first home are using KiwiSaver. I contribute to KiwiSaver as well, even though I've got houses, because I know that it's an easy way for me to save for my retirement. Yeah, you're right. And I remember when I started my KiwiSaver here, so the banker advised me to put in the conservative if you want to buy a Yeah, house. I mean, it's really a nice advice, like from you, like it should be like a growth fund so that you can earn as much as possible. Because of course there is a risk as well, but like there is a gain too. So we have last 3 minutes, Sarah. I just need your advice when someone actually fixing the loan. So do you suggest, like, if someone is fixing like 900,000, so do you suggest that they should be fixing with the chunks like 300,000, 400,000, and 200,000 in different, you can say, with different interest rates, like 1 year fixed, 2 years, then floating rate? So yeah, what do you suggest? Because there are some advices from the community, yeah, like everyone has their own experience. yeah. So I recommend floating at the moment, because the floating is the most aggressive rate, and that's the rate that always goes up the highest. So at the moment, the floating rate is about 5.6%. So the floating rate normally stays a percentage above what the fixed rates are. I would only float it. I only ever float a small portion of the loan. So 20, 30, 50,000. Now I float it if a couple of things. One, you are going to get money as a gift from family. Two, you are going to get an inheritance that can pay that bit off. Three, you are commission based, and you know that you're going to earn really good commission, because by floating that small portion, you can do what's called a rapid repay, and you can pay that off. But yeah, I honestly, in this market, I used to float about $100,000 of our mortgage, but I don't do it in this market because it's just too expensive with the interest rate. Yes, you can break your mortgages up. My own personal one, I've got most of it on 2 years and then a small part on 3 years. By breaking it up, what you are doing is you are sort of safeguarding yourself, having a massive, so say you've got a mortgage of $900,000 and you just fix it for 2 years. In 2 years' time, if the interest rate is 7%, you're rolling your whole $900,000 off onto that 7%. So that could really skyrocket your repayments by $1,000 a month. If you were to break your mortgage into two parts, fix sort of $500,000 for 2 years and then $400,000 for 3 years, what you're doing is sort of safeguarding yourself so you don't have big chunks coming off when they're due.
So I tend to break a mortgage up. If it's more than $600,000, I tend to break it up into 2 chunks. So yes. Thank you, Sarah. Thanks for the advice. It's really, like you can say, a demanding question from the community because everyone is concerned like they should fix for, like you can say, the whole Yeah. amount, or they should split it between the Yeah. different. Yeah, it's a good idea to split it because otherwise they can lose more. Yeah. Thanks for your advice, and it's just the last minute of our show. If any advice you can give to the community, it will be fantastic. And guys, we have Sarah's contact number on our screen. If you need any advice, she's awesome. So the bit of advice that I would give is, come December 1st, the banks are now using a new system. This is a system that goes through your bank statements and highlights where your biggest spending areas are. They've never done this before. Normally, we would send up 3 months of bank statements. You'd have a human, so somebody like me, go through them and go, okay, so they spend $400 on groceries, they've spent $500 on entertainment, they've got $200 in childcare. So it would be manually gone through. Now they've got such high-tech systems from December 1st going through line by line by line of each statement. So if you are going to apply for a home loan in the next 6 months, 6 to 12 months, you really need to clean up your statements. So don't miss any payments. Don't be late on any payments. That affects your credit history. Try not to overspend. I know it's hard in lockdown. I'm the queen of Uber Eats. Our family gets Uber Eats probably 2 or 3 times a week. Okay. But try and really just think that you've got somebody going through your bank statements and you want them to think that you're in financial control, because they do look at that. So they want you to be what's called financially astute. So they want you to be good with money. So that's the big change come December 1st, that computer systems are now looking at bank statements. And even though you could say to your bank manager or your broker, no, once I get my house, I won't spend that much on takeout, or no, I can up my shopping bill and I will make sure I go to Pack and Save and I'll really meal plan it. They don't care what you're going to do. What they do care about is what you've done in the past, because that reflects on how you manage your money. So it is going to get tighter, but again, we'll always find a way to get lending. So just be mindful about bank statements. That's probably the biggest advice, and that's the banks are advising us to pass that on to our clients. Thank you for valuable advice. It's really nice because, of course, it will, if someone is going to apply for the mortgage and the bank is using the software to evaluate whole financial statement, of course, so it will be really hard for them. So it's really nice advice. Thank you so much, Sarah, for your time today. It's really nice to meet you always, and I will invite you some other time, and we will have a detailed discussion. Thank you. Thanks for your time today. Thank you. No worries. Take care. But yeah, my phone number is at the bottom of the screen, and I do normally answer my phone all the time. So if you've got any questions, I'm a completely free service and I'm here to help you. And my job is to hold your hand and make sure that we get that loan approved. Sure. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you. Bye. Bye. Great evening. Bye. You too. Bye. See you. Thank you, guys. Thanks for today's session. So it was really lovely session. So we will come again after a fortnight. Thank you. Thanks for your time.